Hello children. This video is about women's wear. That's chapter 3.4 of class 12 fashion studies book. Children, women's wear, I will be covering this in two videos. This is the first video, and after this you'll get the second video for this chapter, so that this one single video has a smaller segment of the content that's comfortable understanding, and the remaining half will be covered in the next video. So women's wear hota kya hai actually? Garment that is meant, or set of garments that are meant or made for women. Now, it is always believed that men, they dress up in a very simple manner. They do not have too much of design details in their garment. But जो women के garment होते हैं उसमें they expect a lot of things or elements in their garments. वो चाहते हैं कि उनके garments में बहुत कुछ elements हो, बहुत color हो, texture हो, prints हो, comfort हो, सारे elements चाहिए उनको अपने garments में. So there was a designer Coco Chanel, और उन्होंने कुछ कहा था, उन्होंने कुछ कोट किया था about women and their dress or their dressing sense. So dress shabbily and they remember the dress. Dress impeccably and they remember the woman. So she simply said कि अगर आपने गंदे से कुछ पहना हुआ है, अच्छे से नहीं पहना, shabbily पहना है, so then people remember that yes, this person was dressed up in a shabby manner. But जब अगर आपने बहुत ही impressive, elegant तरीके से कुछ पहना है, so then people remember the lady or the woman or the female who wore that costume. So women जो है हमेशा designers का interest area रहा है. So you pick designers all around the globe and you would find कि mostly designers women's wear पे work कर रहे हैं, because this is one particular segment that demands a lot. So that is why women's wear has always been at the center stage of fashion. Now let us move to society and development of women's wear. So women's wear ready to wear collection है या haute couture collection है, ये एक दिन में नहीं बनी, but it took years and years for designers to understand what kind of styles they want, and then the designers, they came up with their labels, and slowly we had the ready to wear industry that also grew in all around the globe. So पहले कैसे होते थे garments? Mostly you used to get garments custom made for yourself from maybe a tailor or a dressmaker. हर कोई अपने garment को अपनी measurement के accordingly किसी tailor से या dressmaker से stitch करवाता था. And जो घर में ladies होती थी, those women at home, they all knew how to cut the fabric and also stitch garments out of that fabric for their family. So जो poor class होता था या middle class होता था, वो लोग बाहर से garments नहीं बनवाते थे, वो खुद ही stitch करती थी. The ladies of the house, they used to stitch for the whole family. So ultimately custom made garments जो थे या bespoke garments जो थे, वो elite class को के लिए belong करते थे. वो वही लोग ही stitch करवा पाते थे किसी tailor से. To help women engaged in sewing at their homes, several women's wear magazines began to include sewing instructions. So अब इनको अलग अलग styles कैसे बनाने हैं, उनके लिए pattern कैसे बनाना है, उसको कैसे stitch करना है, so ये सब information देने के लिए कुछ magazines थी, जैसे Harper's Bazaar थी, बर्लिंगटन थी, जिन मैगजीन्स के अंदर उनको स्टिचिंग डिटेल्स दी जाती थी. सो इनिशियली स्टिचिंग इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन वाज गिवन, बट धीरे धीरे उसके अंदर पेपर पैटर्न्स भी वो लोग प्लेस करने लग गए. सो गेटवे शीट या बटर पेपर पे पैटर्न्स बने होते थे, अलग अलग साइजेस के करके वो उसमें प्लेस करते थे.
सो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंगली ग्रेडेड साइजेस क्या होता है कि आपका एक मेन साइज उसमें बना होता है और उसके बाद में उसके अराउंड जो है नेक, शोल्डर, आर्म होल, साइड सीम, हेम, सब तरफ जो है आपके एक्सटेंशंस शो करते हैं. सो स्मॉल साइज, अगर आपका मीडियम साइज है, आपकी मे बी ब्रदर या आपकी सिस्टर का स्मॉल साइज है, तो आप उसको छोटे साइज में कैसे बना सकते हो सेम पैटर्न को यूज करके. So these kind of instructions were given in those magazines. So then after this, the introduction of sewing machine. So sewing machine introduced hone se pehle what happened? They used to do all the stitching with their hand, and obviously it was a cumbersome task. काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता था. एंड आई रिमेम्बर माई ग्रैंड मदर ऑल्सो मेनी अ टाइम्स, यू नो, शी यूज टू स्टिच हर सूट्स विद हर हैंड. मे बी बिकॉज बचपन में वो लोग ऐसे ही करते थे, उन्होंने यही देखा था, एंड दैट इज हाउ शी डिड इट. एंड शी यूज टू फील मोर कंफर्टेबल, रादर उनको लगता था कि वो हमेशा एंगेज्ड है एक पर्टिकुलर टास्क में ऑफ डूइंग अ वर्क, दैट इज हैंड स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरीज एंड स्टफ लाइक दैट. बट जब सोइंग मशीन इंट्रोड्यूस करा तो उससे क्या हुआ, अब घर पे गारमेंट्स बनाना ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहा उनके लिए. दे वर एबल टू फिनिश दैट टास्क faster. And this home dressmaking, that is development of garments at home, it continued for a very long time. Again, हमारे इंडिया में तो पहले अगर आप लोग, यू नो, इफ यू आस्क योर मदर, योर ग्रैंड मदर, दे वुड यू नो टेल यू कि उनको वेडिंग में जो है एक सोइंग मशीन मिलता था. क्यों? क्योंकि जिससे कि वो खुद अपना गारमेंट्स को स्टिच कर सकें घर पे. बट व्हाट हैपेंड, जब 20th century आया, so then women, they started moving out of the house, they started working, and they started working as teachers, as governess, as typist. अलग अलग टास्क उन्होंने लेने शुरू करे. Now when they started moving out, so they didn't get too much of a time back at home to do the stitching. And so the ready to wear clothing, the need for the ready to wear clothing arose. So then they felt that there is a need to start buying garments from the market that are readily available for them. So with the increase in the scope of their activities, the need for ready to wear clothing arose. This social change naturally led to a gradual shift away from the elaborate clothing and hairstyles of the past towards simpler silhouettes. So ready to wear garments ज़्यादा exaggerated garments नहीं होते थे, बहुत ही simple garments होते थे जो इनके daily wear के लिए उनके लिए available होते थे. And when the ready to wear industry started flourishing, so what was the next need? Next need was the introduction of size charts. Standard measurement size charts were introduced in the market. और इससे क्या हुआ, हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं, साइज 22, 24, 26, 28 ऐसे इवन नंबर्स में साइजेस होते हैं ट्राउजर्स के या लोअर्स के. ऐसे ही जो अपर गारमेंट होते हैं उनके साइजेस होते हैं 38, 36, 40, 42 ऐसे करके दिए होते हैं. So they are basically the chest or the bust measurement, and they follow that to develop the garment. So standard charts होते हैं, they have the standard measurements of their target customer, और उसकी basis पे garments बनते हैं. Now this coincided with the development of manufacturing facilities for large scale production of ready to wear garments. Large scale production की need हो गई because now more and more women, they started working out of the house, they started moving out of the house, and so they were not getting too much of a time to develop these garments at home. So ready to wear garments कुछ ऐसे होने चाहिए जो आसानी से बना सके, that is easier to produce, and they are very affordable, more affordable to the person buying it. तभी तो वो खरीदेगा, अगर वो महंगे होंगे तो कोई क्यों खरीदेगा. In the post-World War period, women began to excel in multitasking, handling their official work
with responsibilities of their home and children simultaneously. Appropriate dressing for the workplace with hectic schedules led to the need for easy to wear and comfortable clothing. Because वो बाहर जाती थी काम करने के लिए, so उनको वर्क वेयर भी चाहिए था. और वर्क वेयर जो है उनका ऑफिस वेयर और वर्क वेयर, दे वांटेड कि हमें सारा दिन वहाँ पे काम करना है या वी हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स. सो ये गारमेंट्स होने चाहिए जो बहुत ही इजी टू केयर एंड इजी टू वेयर हो. मतलब उनको क्लीन करना, उनको मेंटेन करना आसान हो, उनको पहनना आसान हो, ज़्यादा इलेबोरेट नहीं हो. बिकॉज इससे पहले गाउन्स पहनते थे वो लोग जो बहुत ही इलेबोरेट होते थे, जो बहुत ही एग्जैजरेटेड होते थे. एंड ये कंफर्टेबल भी होने चाहिए बिकॉज उनको उसको काफ़ी देर तक पहनना है. Next portion or segment of this particular chapter is trends in women's wear. अब women's wear को हम लिमिट नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर ट्रेंड या स्टाइल के ऊपर. सो ट्रेंड फोरकास्टिंग क्या है? ट्रेंड फोरकास्टिंग है जो ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा इस सीजन में ये सिलुएट है, नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट अभी एस सिलुएट है तो नेक्स्ट शेप जो सीजन है उसमें रेक्टेंगुलर सिलुएट होगा, फिर नेक्स्ट में ओवल होगा, सो या पियर शेप होगा. अलग अलग सिलुएट्स वो ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं. And all this prediction happens before the season starts. So the development of trend forecasting, where future trends are predicted for a particular season, enables the designer, fabric manufacturer, garment manufacturer, and retailer to plan the design and production of garments. And all this planning, that is the design development, it's planning related to production, related to retailing, marketing, it all happens. And it all happens around 1 to 1.5 year before the season starts. So अभी इस समय नेक्स्ट ईयर विंटर के लिए जो है प्लानिंग हो रही होगी. उसकी फर्दर आगे नेक्स्ट सीजन समर के लिए प्लानिंग हो रही है. तो डिजाइनिंग होएगी, फैब्रिक आने में टाइम लगता है प्रोडक्शन के लिए बिकॉज ये 1 or 2 गारमेंट्स नहीं है बट ये लैक्स एंड लैक्स ऑफ गारमेंट्स दे डेवलप. सो उसके लिए फैब्रिक भी ज़्यादा चाहिए, उसको प्रोडक्शन में उसकी जो स्टिचिंग है, उसकी फिनिशिंग है, उस सब प्रोसेसेस में टाइम लगता है. सो दीज ट्रेंड्स आर प्रिडिक्टेड 1 to 1.5 year before the season starts. The general trends are analyzed by individual companies to create a collection that is suitable for their company and target clients. हर एक ब्रांड का, हर एक डिजाइनर का एक टारगेट कस्टमर होता है या he has a target client, and for that particular target client they develop a collection. So collection basically has a few set of garments in it that are designed and developed by the designer or the brand for a particular season. In India, brands like Van Heusen, which is the women's segment, Allen Solly Women, etc., offer fashionable workwear collections for all sizes. So somebody who is looking for workwear or office wear can look up to these brands for women's wear workwear collection. Then not just that, but women's wear में एक और segment है, that is maternity wear. Next segment is plus size women. So the plus size brands are also so very in these days. पहले people, they used to feel bad about their body shaming बहुत ज़्यादा होती थी. But अब people have grown up and they understand, they become more mature and they understand कि एक segment है ये अलग जिसमें maternity wear में the care that they need to take in the development of those garments, it is taken care in maternity wear. Adjustable garments होते हैं, garments में बहुत ease होती है, so that is taken care here. Plus size garments are meant for plus size bodies जिनके जो
स्टैंडर्ड साइजेस नहीं होते, बट उनके कुछ bigger sizes होते हैं, so उनके लिए भी प्रोफेशन है. So I have a few examples here for you. You can also search on internet. So it is Beauty, that is a brand that does develop maternity clothes. Then you have Cuddle, maternity and baby or the kids wear brand. You have Curvaceous. Curvaceous for women with curves is basically a plus size brand for women. Then you have plus sized fashion, another brand. Body positive is another plus size brand. So you have a multiple set of brands that are there in the market for these two segments. Then is Indian women's wear. Indian women's wear के कितने सारे brands I've placed here. Global Desi, Ux Clothing, Biba, Fab India and Chumbak. ये सब Indian brands हैं, Indian women's wear brands. और इंडियन women's wear में क्या हमें देखने को मिलता है? इंडियन एस्थेटिक्स, उनके अंदर इंडियन टेक्सटाइल्स हम लोगों को देखने को मिलती है, हमारी हिस्ट्री, द हैंडीक्राफ्ट, द एम्ब्रॉयडरीज, you would see all that in Indian garments. Apart from that, you also see the Western influence on these garments. Indian garments, जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स थे वो ड्रेप्ड स्टाइल्स थे, और हमने हिस्ट्री ऑफ फैशन में किया था अंतर्या उत्तरया कायाबंद, so they were all draped garments. So उन्हीं से ही इंस्पिरेशन लेके we have an Indian garment that is a sari. साड़ी इंडिया में अगेन इतने स्टेट्स हैं जहाँ पे साड़ी पहनी जाती है, और हर स्टेट में अलग तरह से साड़ी ड्रेप करते हैं. So the length of the sari ranges from 5.5 yards to 8 yards. And these saris are worn with a blouse. Or another term that is used for the blouse is choli. अब इंडियन गारमेंट्स पे इन्फ्लुएंस किसका है? मुगल्स का. मुगल्स इंडिया पे काफी टाइम रहे, उन्होंने रूल किया इंडिया पे, एंड सो Indian garments ka aesthetic remained, but then we also had influence of Mughals. So the garments, stitched garments like salwar kameez, kalidar kurta, pajama, sharara, gararas, they were all introduced by to the Indian people during the Mughal rule. The karigar, who could be a weaver, a tailor, or an embroiderer, was specially brought in from other countries to make garments for the Mughal royalty. So जो मुगल rulers थे वो अपने लिए बुलाते थे स्पेशली कारीगर्स को, जो उनके लिए वीव करके फैब्रिक बनाते थे, जो उनके लिए स्टिच करते थे गारमेंट्स, या उनके गारमेंट्स पे एम्ब्रॉयडरी करते थे. They settled down in India for several generations and never went back, which also explains the reason for the finest tailors and embroiderers belonging to the Muslim community today. So again, it is believed that most of the tailors, good tailors, and the embroiderers that are there in the Indian markets, they belong to the Muslim community. और वो लोग पहले इसी तरह से हमारी कंट्री में आए थे, वो यहीं पे सेटल हुए, and they are part of our country now. And so one influence was the Mughal rule. The Mughal style is very feminine, elegant and dignified. अब कुछ एम्ब्रॉयडरीज भी हैं जो मुगल कारीगर्स इंडिया में लेके आए, and they are चिकनकारी, आरी वर्क एंड कशीदाकारी. अब ये जब वर्क होते हैं गारमेंट्स पे या फैब्रिक पे, सो व्हाट हैपेंस, इट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ द गारमेंट. वो और ब्यूटीफुल लगने लगता है. प्लेन फैब्रिक होगा या फिर उसके ऊपर कुछ वर्क होगा तो डिफरेंस अपने आप ही आ जाएगा उसमें, और वो बहुत ही रिच भी लगने लगता है. एंड ये सब वर्क सिर्फ सूट्स या सलवार सूट्स पे नहीं होता, but we also do it on stoles, we do it on saris, we do it on different fabrics and garments. So then is a customized variation in traditional kalidar kurta and churidar for women.
Another influence apart from Mughal, another influence was the Britishers. So British women यहाँ पे, क्योंकि Britishers ने बहुत टाइम रूल किया इंडिया पे, so इसीलिए British women used to stay here, and उनके अराउंड जो लेडीज होती थी वो भी उनको देख के गारमेंट्स वैसे थोड़ा सा अडेप्ट करने शुरू कर दिया था उन्होंने. सो इंडियन टेलर्स दे लर्न टू स्टिच गारमेंट्स विद डिजाइन डिटेल्स that were drawn or picked from the clothes that the women, British women, used to wear. So pehle Indian women used to wear only saris, but when these British women, they came and they saw them wearing tops, so वहां से इंस्पिरेशन लिया ब्लाउज का. और इसीलिए आप देखोगे कि वो ब्लाउज भी जो है वो बेसिकली एक शर्ट है जो वो लोग पहले पहनते थे. So here is another example. So I have this picture here of a sari blouse that this lady is wearing, और इसकी जो कॉलर है वो बैंड कॉलर है. बैंड कॉलर मतलब एक स्ट्रिप ऑफ कॉलर जो स्टैंड आउट करती है, फोल्ड नहीं होती. या फिर वो बनी होती थी पीटर पैन कॉलर जो उसके साथ में ब्लाउज के साथ में कनेक्ट किया होता था. तो पीटर पैन कॉलर इज बेसिकली हम एक फ्लैट कॉलर होता है जो किड्स वेयर में हम ज्यादातर देखते हैं आजकल, बट तब women used to wear it in this manner. Then the next example is of a petticoat. Women wear petticoat. So साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनते हैं. पेटीकोट की इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? Again, they saw these British ladies. They used to wear a embroidered skirt, and वहां से इंस्पिरेशन लेके they started wearing, the Indian women also started wearing petticoats. So this is how the inspiration came, but that was for the good. So then is the modern Indian women's wear. And what kind of modern Indian women's wear do we see? We see a blend of the Mughal culture, the British culture, that is the Western designs, and India ने अपनी एक नई कलेक्शन में कह सकते हो या नया कैटेगरी ऑफ गारमेंट्स दैट दे हैव डेवलप्ड, एंड दैट इज द इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स. सो you would see the existence or the coexistence of the Indian garments, Mughal garments, and the Western styles, or we can say Indo-Western styles. So children, would repeat once again, ये पार्ट 1 है विमेन्स वेयर का. पार्ट 2 दूसरी वीडियो में आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट फॉर चैप्टर 3 क्लास 12. आपको वहां पर अपडेट इसका मिल जाएगा जिससे कि आप फर्स्ट वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो इजीली देख सके. So subscribe to the channel, like the video, and do not forget to share it with your friends. Thanks a lot for watching.